Even lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant for fun. I just got out of the shower and I recently got a haircut. So I went quite short. And if you want to know everything, how I got it, not how I got it, what haircut I got, and how nervous I was while getting it, then check out this vlog right here. And आज ना मतलब मैंने 2-3 दिन पहले ही haircut कराया था, तो today is the first day of washing it, like hair washing it. तो आज मुझे खुद से इनको style करना है because I do have to shoot a video as well. So I'm thinking, let's style it together. I actually got like a new hairstyling tool from Nykaa, and this is not sponsored. First of all, खुद के पैसों से खरीदा है. So I thought कि इसको try करते हैं. साथ में मैंने literally अपना package खोला भी नहीं है. It's still all sealed. So I got the blow blush, not blush, the blow brush from Ellen Truman, and I've heard like really good things about it. And I got it in the white color. Look how pretty! They tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every romance loving 20-something woman wants? Midnight in Paris, I've always heard. I think this कुछ time तो इसको use करना पड़ेगा just to get a hang of it. But I thought कि first time let's do it on the vlog. इसमें यहाँ पे मुझे heat settings तो दिख रही हैं, like there's cool, low and high. 3 heat settings right here. इसके अलावा तो there's nothing else, and off switch. I'm applying this hair serum from L'Oreal, their extraordinary oil, and I actually don't have that heat protectant spray. मेरा ना expire हो गया था, so I threw it out recently. So I have to get a new one. If you guys have any recommendations ना किसी अच्छे से heat protectant spray का, please tell me. 20 minutes later. Okay, it's almost dry. I'll just let it air dry, and now it's time to style it. I'll comb my hair first क्योंकि ना ये brush के bristles में कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा hair fall हो जाता है in general. Okay, done. This is my natural hair without any styling or anything. Also, you guys are loving the haircut, so thank you so much for that. Now let's start with this. यहाँ पे as I told you, there are all the settings. This is very noisy. I won't be able to talk when this is on. So मैं voice over कर लूँगी, या फिर you enjoy this time lapse, and then I'll show you how the hair has turned out. If I'm able to get the grasp of how to use this and how to like properly do hair with this, so let's just learn. Magic in the air as you're watching people dance by sun. Midnight in Paris, oh what a feeling. Steps on cobblestones, thinking this must be La Vie en Rose. Maybe I get a place. Okay, so this side is done. Can you see the volume? Wait, is this camera not focusing? Yeah, can you see the volume? And the best thing is मैंने अभी सिर्फ cool वाली setting में किया, since मेरे पास heat protectant नहीं था, तो मैं ना high में नहीं करना चाहती. There's high, low and cool. I did this in the cool setting. Also, the best thing about this blow brush that I found right now is इसको ना when you comb your hair, तो उससे frizzy hair या फिर जो छोटे-छोटे baby hair होते हैं, मैंने बहुत सारे actually, and they just stick out. वो सारे भी अच्छे से बैठ जाते हैं. लाइक कैन यू वेट, आई डोंट थिंक कैन सी कि ये कितना क्लीन और कितना सही लग रहा है ये साइड. आई लव दिस. आई विश आई इन्वेस्टेड इन दिस ब्रश बिफोर. ऑल्सो आई एम थिंकिंग अबाउट लो सेटिंग में भी करके देखती हूँ. That's right across the Notre Dame. Oh my god, I'm so happy I got it. I love my hair. इतना smooth, इतना soft feel हो रहा है ना. I just need like a good heat protectant now, and I'm sorted. Am I going to up my hair game now with all these styling tools and this new haircut? Okay, if you want to see like a proper difference, this side is with the blow brush. This looks more smoother.
थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा. आई थिंक आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर वॉल्यूम इन द ग्राउंड पार्ट एज वेल. नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो आई लर्न कि इस एरिया पे कैसे ज़्यादा वॉल्यूम ला सकते हैं. And then this is the side without the blow brush. It's not that bad, but this side obviously looks much better. The roof will be leaking, but I'll be as happy as they come. Yeah, I love it. Like, I love the effect of the brush and I love the hair. Like, oh my god, I was so worried ना कि मतलब वहाँ पे when you go to a salon तो वो तो सिर्फ स्टाइल करके देता है, but मैं नहीं कर पाऊंगी वैसे स्टाइल ऑफ अच्छा नहीं लगेगा. But I'm so happy that I got the blow brush. So this actually I think costed me 2500 on the sale, and वैसे इसका प्राइस लिखा है इसमें 3500. बट मुझे याद है कि मुझे 2500 के राउंड पड़ा था, कुछ सेल चल रही थी नायका में. एंड वर्थ एवरी पेनी. मुझे ना अभी शॉर्ट्स शूट करने हैं, रील शूट करनी है और एक यूट्यूब वीडियो भी शूट करनी है. आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेकअप करना है. मेकअप नहीं किया अभी तक. फटाफट खाना खा के आती हूँ एंड देन लेट्स डू एवरीथिंग. I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Hi guys, I totally forgot कि मैं vlog भी कर रही हूँ आज. So a YouTube video is done, a reel is done, and I just shot the कुर्ता हॉल. आई थिंक आपने ऑलरेडी देख लिया होगा द मिंत्रा नाजियो कुर्ता हॉल. तो अभी मैं वही सब शूट कर रही थी, सब ट्राई ऑन वगैरह किया. दिस इज द लास्ट कुर्ता. आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट टू कीप इट या फिर एक्सचेंज इट, बिकॉज एक तो मेरे लिए साइज़ बड़ा है तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा. मैंने सब वीडियो में आपको इसे एक्सप्लेन किया हुआ भी है. बट सेकेंडली मुझे ना ये रेड वाला प्रिंट इतना पसंद नहीं आता. दिस इज द ओनली रीज़न आई एम नॉट लाइक श्योर, ऑल्दो दिस हैज़ अ पॉकेट. सो वेट, पॉकेट. तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें काफ़ी. माई मदर इज थिंकिंग दैट शी विल कीप इट वन आई एक्सचेंज इट फॉर अ स्मॉलर साइज, बट आई माइट रिटर्न इट एज वेल. Not sure right now. I just got done with the video. This was the last piece. And अब मुझे ये सब संभालना है. And I have to shoot more shots as well. मैंने एक बहुत exciting reel भी shoot करी है in a very like पुराना like oldie song, and really excited to edit that. If I show you the halat of my bedroom right now, I'm not even sure if I should show this, but just look at my bedroom. This has become my open closet at this point. Thinking I'll leave tomorrow and I might do like a vlog, like I might vlog it as well, क्योंकि मुझे ना ऐसा closet clean out भी करना है. और डीज क्लोजेट पे भी मैंने बहुत टाइम से कुछ डाला नहीं है. मुझे इतने सारे आप लोग के DMs आ रहे हैं ना कि डीज क्लोजेट में कब सामान आएगा. तो मुझे उसके लिए भी मतलब ऑब्वियसली आई हैव टू फाइंड आउट थिंग्स क्या हटाना है. सो आई एम थिंकिंग कल या परसों आई डू लाइक अ ह्यूज क्लोजेट क्लीन आउट. माइट व्लॉग इट, नॉट श्योर दो. बट अभी के लिए चलो थोड़ी सफाई कर लेती हूँ. कैमरे की बैटरी चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगेगा. पूरी बैटरी खत्म हो गई है बिकॉज सारा शूट कर लिया है. आई थिंक ये चार्ज होने तक मैं शॉर्ट्स भी व्लॉग नहीं शॉर्ट्स भी शूट कर लूँगी. तो आई माइट सी यू लेटर. Also, I forgot to tell you, I have done some changes around the studio, a little redecorating. मैं फटाफट से जितना मेसी हो रखा है सब क्लीन करके आपको छोटू सा लाइक स्टूडियो में मैंने क्या क्या करा है चेंजेस वो सब दिखाती हूँ. वेट, बट फर्स्ट लेट्स ड्रिंक सम वाटर क्योंकि मैंने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया. ऑल्सो व्हाट इज दिस वियर्ड कैमरा एंगल. वाटर ब्रेक. द बॉटल्स फ्रॉम अमेजोन. इस बॉटल के लिए मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं. मैंने बहुत सारे व्लॉग और वीडियोज़ में ये ऑलरेडी दिखाया है, तो आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हो आई थिंक. मुझे रिसेंट भी इसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. 2 hours later. आई एम बैक. सो इट्स बीन लाइक अ कपल ऑफ आवर्स. मैंने थोड़ा सा काम किया. एक रील नहीं 2 रील और एक शॉर्ट शूट करा. सब साफ कर लिया. एंड आई थॉट आई विल शो यू द स्टूडियो. नाउ ऑब्वियसली मैं इन डेप्थ कुछ नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव शोन यू द एंटायर स्टूडियो टूर. सो चेक आउट दिस वीडियो फॉर दैट. अभी मैं आपको बस जो मैंने थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं रिसेंटली वो दिखाऊंगी. आई कीप ऑन लाइक रीडेकोरेटिंग एंड मेकिंग चेंजेस हियर एंड देयर. I've always heard there's magic in the air as you're watching people dance by sand. Midnight in Paris, oh what a feeling. वर्क डेस्क इज राइट देयर. फुटेज ट्रांसफ़र हो गई है जो मैंने शूट किया है.
अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक्स वगैरह चाहिए होंगे ना तो आपको स्टूडियो टूर दिखना पड़ेगा उसके लिए. सो व्हाट्स न्यू हियर इज एक्चुअली आई हैव एडेड दिस मेकअप ड्रॉर सेट. पहले मैं इसी पे अपना मेकअप स्टोर करती थी, बट फिर मैं मिनीसो से ये ग्लास लाइक एक्रिलिक वाला मेकअप स्टोरेज यूनिट लेके आई, लाइक अ ड्रॉर यूनिट दैट यू कैन यूज टू स्टोर एनीथिंग. मैंने मेकअप स्टोर किया है एंड आई लव दिस. लाइक इसमें मेकअप ऐसे रखा हुआ कितना सही लग रहा है. और इसके ऊपर मैंने ये ऐसे पिंक ग्रीन वाइट सी थीम को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये सब चीज़ें रखी हैं यहाँ पे. अगेन फॉर लिंक चेक आउट द प्रॉपर स्टूडियो टूर. देन यहाँ पर सम बुक्स. हैव यू रेड शॉपaholic सीरीज फ्रॉम सोफी किंजला? प्लीज टेल मी. दिस इज अ रियली नाइस बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी. देन यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा मेकअप और है, मेरे गैजेट, सारा वर्क एरिया. लुक एट दिस, लाइक लुक एट दिस. यहाँ पे फ़ोन चार्जर, लाइक दिस इज़ माई अदर फ़ोन. यहाँ पे फ़ोन कैमरे की बैटरी, यहाँ फोटेज ट्रांसफ़र हो रही है. Now the second change that I have done is ignore that. मैंने ये clothing rack यहाँ पे लगा लिए. Ignore that, like that mess at the back. यहाँ पे ना मैं बहुत जल्दी white curtains लगाने वाली हूँ. पहले यहाँ पे मैंने अपना मिरर रखा हुआ था बिकॉज ये जो डोर फ्रेम है ना मुझे इसको हाइड करना था. बट अब मैं बोर हो गई वहाँ पे मिरर देख देख के. सो आई डिसाइडेड टू कीप माई मिरर हियर. यहाँ पे मैंने ये प्लांट रखा है और एक येलो बैग रखा है जस्ट टू ऐड अ पॉप ऑफ कलर. यहाँ पर एक दूसरा ऐसे ही वाइन टाइप रख दी है मैंने. सो मिरर का पोजीशन यहाँ चेंज हो गया है. एंड हियर आई हैव माई क्लोथिंग रैक नाउ. सो फुटवेयर, क्लोथ्स. यहाँ पर एक वाइट पर्दा आ जाएगा टू हाइड ऑल दैट मेस इन द बैकग्राउंड. ये सब कुछ तो सेम ही है. द स्किन केयर स्टैश. नाउ दिस इज़ ऑल सेम. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेकोर चेंज किया है. मैंने ये पिंक बैग अगेन टू ऐड अ पॉप ऑफ कलर यहाँ पे रखा है. परफ्यूम्स रखे हुए हैं. And then इस साइड में my ring light tripod, another plant. It's currently like 5:45. इस टाइम पे बड़ी अच्छी धूप आती है, पता है यहाँ पे जस्ट सामने से. बट अभी क्लाउडी हो रहा है मौसम. आई थॉट की धूप आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, इतना ब्यूटीफुल रहता है. यू मस्ट हैव सीन इन माई पास्ट व्लॉग्स. बट या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. मैं बहुत थक गई हूँ बट इट वॉज सच अ सक्सेसफुल लाइक अ प्रोडक्टिव डे. ऑल्सो हेयर इज़ होल्डिंग स्ट्रॉन्ग. मैंने पता है बस थोड़ा सा स्ट्रेटनर से यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेट किया था उसके बाद. बट आई लव्ड माई हेयर टुडे एंड आई थिंक वो एलन ट्रूमन वाला ब्रश इज़ प्रीटी गुड. इफ़ यू वांट टू बाय इट आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. नॉट स्पॉन्सर्ड एज आई टोल्ड यू बिफोर. आई गॉट इट फॉर 2500 के अराउंड. एंड फर्स्ट टाइम पे तो मेरे को सही लग रहा है. लेट्स सी. ऑल्सो कोई अगर हेयर हीट प्रोटेक्टेंट का अगर आपका रिकमेंडेशन होगा प्लीज़ ज़रूर मुझे कॉमेंट से बताना. एंड आई एम टायर्ड, लाइक आई एम रियली टायर्ड. और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ क्योंकि आज मैं सुबह वर्कआउट नहीं कर पाई थी. और अभी थोड़ा फुटेज वगैरह भी शॉर्ट करनी है तो पहले वो करती हूँ. और 1-2 मेल्स के रिप्लाई भी करना है. फक, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. आई एम सो टायर्ड ऑलरेडी, इसलिए मैं इतना बैबल कर रही हूँ. बट आई थिंक आई एंड द वीडियो राइट हियर. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस. इफ यू डिड गिव इट अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब करना चैनल को इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye guys, I love you. So where you wanna go? Let's see it all. Selfies on the Great Wall, baby the Taj Mahal. Hey, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco. We could swim with the sharks.